हे हाय व्यूअर्स प्रीवियसली आम लिमिट एंड कंटिन्यूटी टाइप ऑफ फंक्शन कवर अप कर देथिले तो आज आम लिमिट ऑफ फंक्शन कवर अप करबा एंड हां जति किछ डाउट अछि तो आपण मते पचारि परिबे आपण कमेंट बॉक्स लिखि परिबे। चलंतु आज आरंभ करबा लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन ठीक है गोटे फंक्शन देछि y इक्वल टू f of x इक्वल टू 2x प्लस 1 ओके एठी x रो डिफरेंट वैल्यू पाई y रो वैल्यू डिफरेंट हबो आपण देखि परिबे x रो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू देछि y रो वैल्यू डिफरेंट देछि ठीक अछि माने x रो डिफरेंट वैल्यू पाई y रो वैल्यू डिफरेंट हबो आपण एठी देखंतु ए ग्राफ रे ठीक अछि जते बळे x रो वैल्यू 2 वर्ड को अप्रोच करछि y रो वैल्यू 5 वर्ड को अप्रोच करछि देखो तो अपन ठीक से तळु देखि जे तो x रो वैल्यू 2 वर्ड को अप्रोच करछि y रो वैल्यू 5 वर्ड को अप्रोच करछि ठीक अछि वर्तमान पढा इनफाइनाइट फंक्शन ओके इनफाइनाइट फंक्शन तो फंक्शन देछि x tends to a x tends to a okay any for any finite value of a any finite value any finite value कहीं को होछि हमरो y रो वैल्यू को हबो यदि y इक्वल टू 2x प्लस 1 होय ठीक अछि देन a रो एटा एनी फाइनाइट वैल्यू हबो फाइनाइट वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू हबो तो y रो वैल्यू ऑब्वियसली x टू ग्रेटर हबो हो कि नै तो एटा ग्रेटर हबो काठो x थरु x रो वैल्यू a होय y रो वैल्यू को हबो 2x प्लस 1 जोडा हबो x थरु ग्रेटर ठीक अछि माने y अप्रोच करिवो कोठी की y अप्रोच करिवो टू द इंफिनिटी को ठीक अछि y अप्रोच करिवो टू द इंफिनिटी हम आपको लिख परिबा लिमिट x tends to a y equal to infinity माने जत्ते बळे x रो वैल्यू a आड को अप्रोच करिवो y रो वैल्यू इंफिनिटी आड को अप्रोच करिवो माने पॉजिटिव आड को अप्रोच करिवो ठीक अछि वर्तमान आपण एक एग्जांपल नबा एग्जांपल देछि if y equal to 1 divided by x square then limit x tends to 0 y equal to infinity आडको अप्रोच करिवो एटा जानले केमिति देखंतु जते बळे x रो वैल्यू 0 हबो तो हमर कोन हला x स्क्वायर भी 0 हबो हो कि नै जते x रो वैल्यू 0 होची x स्क्वायर वैल्यू 0 हबो तो सेतोल कोन हबो 1 बाय x स्क्वायर कोन हबो जेतोल x 0 होला x स्क्वायर 0 होला 1 बाय x स्क्वायर पॉजिटिव हबो एंड बहुत बड़ा हबो ग्रेटर ठीक से देखो जते बळे x रो वैल्यू 0 को टेस्ट करबो x स्क्वायर 0 हबो से टाइम रे हमर 1 बाय x स्क्वायर भी बहुत बड़ा हबो सिमिलरली देखंतु जते बळे x इक्वल टू और x टेंड्स टू a फॉर एनी वैल्यू ऑफ a जते बळे x टेंड्स टू a हबो फॉर एनी वैल्यू a पे तो हमें एटी y को कोन नबा नेगेटिव वैल्यू y हबो नेगेटिव वैल्यू मोर एग्जांपल लोची ठीक अछि y इक्वल टू -1 बाय x स्क्वायर ओके y इक्वल टू -1 बाय x स्क्वायर वर्तमान ताको हम लिखि परिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 y इक्वल टू -इंफिनिटी ठीक अछि केमिति हला देखंतु
जते बळे x टेंड्स टू हला 0 x स्क्वायर भी टेंड्स टू को हला 0 हो कि नहीं जब x टेंड्स टू 0 हला x स्क्वायर भी टेंड्स टू 0 हला तो से टाइम रे हमर 1 by x स्क्वायर को हला बहुत बड़ो ग्रेटर तो -1 by x स्क्वायर को हेगला बहुत बड़ो किंतु कोथरे इन्फिनिटी रे इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तो बुझेला सेठी जते बळे 1 by x स्क्वायर थिला टू द पावर इन्फिनिटी को जाउला एठी जते बळे -1 by x स्क्वायर हबो सेटू माइनस इन्फिनिटी को जीवो ओके वर्तमान हम पढ़िबा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ठीक है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स रो हमरो तीनटा फार्मूला अछि फर्स्ट फार्मूला 1 limit x tends to a f of x okay limit x tends to a f of x plus limit x tends to a g of x कौन फंक्शन देछि limit x tends to f of x plus limit x tends to a g of x equal to कौन हबो m plus n equal to m plus n कौन पई ना कारण हमरो इंडिविजुअली यार वैल्यू देथिला m यार वैल्यू देथिला n एटा होछि हमर m कोटा लिमिट x टेंड्स टू f of x हला m लिमिट x टेंड्स टू g of x हला हमर n ठीक अछि तो लिमिट x टेंड्स टू a माने x रो वैल्यू a आड को अप्रोच करूछि f of x हला गोटे फंक्शन प्लस लिमिट x टेंड्स टू a x रो वैल्यू a को अप्रोच करूछि g of x हला गोटे फंक्शन f of x गोटे फंक्शन g of x गोटे फंक्शन f of x रो वैल्यू हला m लिमिट g of x वैल्यू थला n जेतले मको एडिशन करबी एकर वैल्यू दिटे भी एडिशन हो जिवो तो m plus n ओके नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई फार्मूलाटा लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू a g of x ओके लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू g of x जेमति m plus हेतला एटा सेमति हबो m गुणन n किबा m मल्टीप्लाइड बाय n ठीक अछि एटा जेमति हला सेमति हमर डिवीजन टाइम सेम फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू a f of x ओके लिमिट x टेंड्स टू a f of x m जान से हम लिमिट x टेंड्स टू a g of x से n तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x को लिखिबी लिमिट x टेंड्स टू f of x लिमिट x टेंड्स टू g of x तो एटा हमर कोन हिजो m डिवाइडेड बाय n तो ए तीनटा हेला हमर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स रो तीनटा फार्मूला गोटे थला एडिशन रो गोटे मल्टीप्लिकेशन रो आ गोटे हला हमर डिवीजन रो हां सब्स्ट्रैक्शन भी अछि जेमति थला एडिशन रो जेमति सब्स्ट्रैक्शन हबो तो एथरे किछ अधिक भाबियार नाही ठीक अछि वर्तमान हम देखिबा सम स्टैंडर्ड लिमिट्स ओके सम स्टैंडर्ड लिमिट्स रो फर्स्ट फार्मूला होची लिमिट जते बळे लिमिट x टेंड्स टू a f of x हबो सेतोले वैल्यू कोन हबो f of a माने देखंतु जते बळे लिमिट x टेंड्स टू a माने x वैल्यू a का अप्रोच करछि f of x वैल्यू हबो f of a किबा आपण एटा f जगह रे p नै परिबे तो फंक्शन नै जाउ ठीक अछि p of x equal to p of a माने x जते जते थिबो जेते हम पकोथिले धरो ଗୋଟେ एग्जांपल नै जिबा एट देछि 2x - 1 तो एटी कोन हबो x रे a पडिबो तो एटा हेगला हमर 2a - 1 एटा दिला इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ a x रे a पडिबो आ से वैल्यूटा हमर टोटली फंक्शन ऑफ a हे जो ठीक अछि नेक्स्ट फार्मूला
लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a यार फॉर्मूला कौन हबो n into a to the power n minus 1 एको हम लेटर डिस्क्राइब करबा क्या बुझिबा वर्तमान आपण खाली एको नोट डाउन करन ठीक अछि नेक्स्ट असला हमर 3 नंबर लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 by n whole to the power n यार वैल्यू जो कहते हैं e ठीक है 1 plus 1 by n whole to the power n equal to e नेक्स्ट फॉर्मूला बुझिबा लिमिट n tends to 0 1 plus n to the power 1 by n यार वैल्यू केते हबो e देखो 4 नंबर फॉर्मूला नेक्स्ट आसी हमर 5 नंबर फॉर्मूला लिमिट x tends to 0 a to the power x minus 1 divided by x limit x tends to 0 a to the power x minus 1 divided by x equal to ln a किंबा log a आपण लिख परिबे log a किंबा ln a ठीक अछि बेटर हबो आपण लिखतो log a तो ये हे गेला हमरो स्टैंडर्ड लिमिट्स रो जति फंक्शन थिला नेक्स्ट देखिबा सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x sin 0 में जाने 0 तो 0 2 नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अगला 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अगला मोर 0 तीनटा अगला लिमिट sin x x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1 x tends to 0 tan x equal to 0 okay next limit x tends to 0 sin x by x limit x tends to 0 sin x थला बेले कोन थला 0 but sin x by x थला बेले 1 okay then 5 नंबर limit x tends to 0 sin x to the power 0 देखिए x to the power एटा sin to the power 0 नहीं sin x to the power 0 divided by x equal to या वैल्यू हो हमरा pi divided by 180 okay pi divided by 180 तो तीसरा हमारा स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स बाकी हम डिस्कस पढ़िबा आज भाई एतिकी थैंक यू।